हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आपण मैंने भल थे। आज आम मैंने कौन करवा जुडिशियरी रिलेटेड जेगुड़ी सब यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जेगुड़ी सब आसाला से आम मैंने प्राक्ट करवा। एवं आपने भाव में क्वेश्चन एंड आंसर प्राक्ट करने चाहते तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करेंगे। ठीक है, देखो आम मैंने तो टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज एंड देखो आम मैंने तो विभिन्न प्रकार PYQ प्राक्ट करुचे। ठीक है, तो चलते आज प्रथम क्वेश्चन देखा। आज प्रथम क्वेश्चन होती देखो अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has the Supreme Court of India placed the right to privacy? ओके, आमर जो भारतीय संविधान रे जो आमर क्यों धारा रे अधीन रे ठीक अछि आमर राइट टू प्राइवेसी आमर न्यायालय रे गोपनीयता अधिकार रखिछन्ते। ठीक अछि, देखंतु ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 16, सी आर्टिकल 19, डी आर्टिकल 21। देखंतु यार सटीक आंसर होछि आमर ऑप्शन नंबर डी। ओके, आर्टिकल 21 ने राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, आमर निजर जीवन जीवन एवं निजर व्यक्तिगत अधिकार बा स्वाधीनता एंड राइट टू लाइफ राइट टू प्राइवेसी अछि। ठीक अछि, गोपनीयतार अधिकार। एंड आर्टिकल नंबर 15 कोन हमर वर्णना करै छै आपण माने कमेंट करंतु। आर्टिकल 15 हमर मेंशन करै छै हमर देखंतु हमर डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन जेपरि कि हमर रेस हला कास्ट हला एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक अछि, आर्टिकल 16 हमर एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक अछि, एंड आर्टिकल 19 हमर या मेंशन करै छै फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक अछि, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपण माने कमेंट करंतु हमर आर्टिकल 19 ने। ओके, राइट टू फ्रीडम केते प्रकार हमर फ्रीडम अछि। ठीक अछि, चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची देखंतु हमर नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची रीट ऑफ अ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ और हाई कोर्ट टू। ओके, हमर जो रीट अछि जो प्रोहिबिशन हमर रीट हमर केते प्रकार अछि आपण माने कमेंट करंतु। ओके, हमर जो रीट प्रोहिबिशन जे ऑर्डर होइते इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक अछि, जो सर्वोच्च न्यायालय हो किंबा उच्च न्यायालय द्वारा जारी करैत एक आदेश। ओके, ए देखंतु ए गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फॉर टेकिंग पर्टिकुलर एक्शन, बी द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास ए लॉ ऑन प्रोहिबिशन, सी लोअर कोर्ट्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एक्सीडिंग देयर जुरिस्डिक्शन, डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। ओके, देखंतु हमर जो सरकार एंड ऑफिसर प्रोहिबिटिंग ओके निषेध करथांती से माने टेकिंग द पर्टिकुलर एक्शन। बी देखंतु पार्लियामेंटरी हला किंबा लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास ए लॉ ऑन ए प्रोहिबिशन। ओके, निषेध and lower courts preventing them from exceeding their jurisdiction, and D होची the president of India to enforce fundamental rights। हम जो भारत जो प्रेसिडेंट ओके they can be enforce करते हैं fundamental rights। देखो सर सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। ओके, lower courts preventing them from exceeding their jurisdiction। ठीक है जी, ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट और ए लोअर कोर्ट ऑफ ए ट्राइब्यूनल। ओके, रिट हमर प्रोहिबिशन इशू कराई था जारी कराई था का द्वारा ना हमर लोअर कोर्ट द्वारा। ओके, एंड डायरेक्टिंग टू इज सीज टू प्रोसीडिंग इन केस वेयर कोन प्रकार केस हला जो थ्री इट इज हैज नो जुरिस्डिक्शन और इट्स एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। ओके, देयर इज नो जुरिस्डिक्शन और सेटा एक्सीडिंग कराई था अधिक समय पर्यंत यह एक्सीडिंग कराई था। ठीक है, चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची which of the following statement are correct regarding the collegium system in India? Okay, correct या पचाते। ठीक है, देखंतु 1 it is a system for the appointment and transfer of a judges that has evolved through judgment of the Supreme Court, and 2 the collegium is headed by the Prime Minister of India। देखंतु हमर जो प्रथम हेउची हमर देखंतु जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमर जो सुप्रीम कोर्ट रो जो जजमेंट हैला बा जो मंतव्य। ठीक अछि, और सिस्टम जार अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर करता है जजेस मानकर। एंड 2 देखो तो कॉलेजियम इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉट हमर कॉलेजियम सिस्टम रो हेड होचंते हमर सीजीआई मन रखिथिबे। ठीक अछि, सीजीआई दैट मींस हमर 2 इज इनकरेक्ट। ठीक अछि, सेते पय यार ऑप्शन नंबर 1 हेउची करेक्ट। ओके, ठीक अछि, चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची हमर देखंतु कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 यह देई अछि एंड देखंतु किउटा करेक्ट है पचारि अछि। ठीक अछि, देखंतु 1 स्टेटमेंट 1 देखंतु हमर इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड by state government। prisons हमर मैनेज्ड होइतनी का द्वारा राज्य सरकार द्वारा। ठीक अछि, with their own rules and regulation for the day to day administration of a prisons। 2 देखंतु in India prisons are governed by the Prisons Act 1894 which expressly kept the subject of a prisons in the control of a provincial government। ओके, देखंतु हमर जो स्टेट गवर्नमेंट बा राज्य सरकार रो निजर गोटे रूल अछि नियम एंड रेगुलेशन व्यवस्था अछि जहा माध्यम रे हमर जो प्रिजन बंदी कारक मानकू से माने मैनेज करता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स। बट 2 देखो स्टेटमेंट 2 देछि। ओके, प्रिजन्स एक्ट हमर जो 1894 रे प्रिजन्स गवर्नड इन इंडिया एक्सप्रेसली सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स आर द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ओके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा हे कंट्रोल थाए किउटा करेक्ट एटे आपण माने कमेंट करंतु। देखो यार सटीक आंसर हेउची हमर ऑप्शन नंबर
ये देखो सठिक आंसर होउछ हमर ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी कहले हमर बोथ। ओके, यार करेक्ट अटे, बट हमर देखो स्टेटमेंट 2 होउछ हमर करेक्ट एक्सप्लेनेशन अटे रिगार्डिंग हमर ऑन द स्टेटमेंट 1। ठीक अछि, बट 2 इज मोस्टली करेक्ट अटे। ठीक अछि, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होउछ हमर विथ रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशियरी संबंधित किछि ऑप्शन देछि ता रिगार्डिंग हमर केउटा करेक्ट अटे, करेक्ट पचार। ठीक अछि, देखो हमर अबाउट इंडियन जुडिशियरी देखो ऑप्शन नंबर ए देखो 1 एनी रिटायर्ड जज। ओके, जो जज हम रिटायर्ड होई थिबे, ठीक अछि, बा अवसर प्राप्त होई थिबे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक, से माने को पुनर्बार से माने को डाकी थांती। ओके, टू सिट एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, क्यों प्रकार ना से माने सुप्रीम कोर्ट जज हिसाब रे बा विचारपति हिसाब रे से माने को पुनर्बार डका जाय बसिबा पई, एंड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विच इज प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये होची करेक्ट, वन होची करेक्ट। ओके, देखो हमर जो जेते अवसर प्राप्त होइतिबा हमर रिटायर्ड जज गुडी को पुनर्बार मध्य सुप्रीम कोर्ट रे डका जाय एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिसाब रे। ठीक अछि, कहार परमिशन द्वारा हमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बा भारत रा प्रेसिडेंट को परमिशन द्वारा से माने को डका जाय। ठीक अछि, टू देखंतु high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. That means what? देखो आज हमारा हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक अछि, has the power to review its own judgment as the Supreme Court does। जेपरि भाबरे देखो हमारा सुप्रीम कोर्ट रो कोनसे प्रकार हमर रिव्यू होला। ठीक अछि, पावर ऑफ रिव्यू चेक करिवे तांकर कोनसे प्रकार व्यवस्था से मानकर जजमेंट रो व्यवस्था को रिव्यू करबा सहित से मानकर निजर पावर बा शक्ति थारे बा माने जांच करिवार सेही परि भाबरे हाई कोर्ट रो मध्य से प्रकार रो निजस्व अधिकार अछि बा स्वाधीनता अछि जे कि से विभिन्न प्रकार जांच बा रिव्यू रो सिस्टम मध्य तांका पाखरे पावर अछि। ठीक अछि, सेति में हमर ऑप्शन नंबर सी होउची बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक अछि, चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होउची देखंतु इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज। ठीक अछि, हमर जुडिशियल रिव्यू संबंधित कि चारोटी ऑप्शन देछि, एथि मध्ये केउटा करेक्ट अटे रिगार्डिंग द जुडिशियल रिव्यू। ठीक अछि, ए द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ठीक अछि, बी देखो द पावर ऑफ द जुडिशियरी, हमर जो जुडिशियरी जो पावर टू क्वेश्चन एंड द विजडम फॉर द लॉज एनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। सी द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू रिव्यू ऑल द legislative enactment before they are assented by the president। डी देखो द पावर ऑफ द जुडिशियरी to review its own judgment given earlier in a similar or different cases। देखो जुडिशियल रिव्यू संबंधित देछि चारोटी ऑप्शन। प्रथमे ए देखंतु हमर जो जुडिशियल शक्ति बा पावर प्रोनाउंस करथा है ऑप्शन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ऑब्वियसली संवैधानिक किछि लॉ नियम हला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को से प्रोनाउंस करथा है। ओके, वन इज करेक्ट। टू देखंतु द पावर ऑफ द जुडिशियरी। ओके, हमर जुडिशियल जो शक्ति बा पावर क्वेश्चन हला एंड विजडम रिलेटेड लॉ एनैक्टेड करथा बाय लेजिस्लेचर द्वारा या कोन enacted करा है। नो, 2 इज इनकरेक्ट, बी होची इनकरेक्ट। सी देखो द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू रिव्यू, हमर जो पावर ऑफ जुडिशियरी होची रिव्यू करथा है ऑल द लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट, जते गुडी को सब हमर विधानसभा गुडी को जो एनैक्टमेंट हैला अधिनियम हैला बिफोर दे आर असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को पूर्व प्रथमे हमर जुडिशियरी रिव्यू करथा है। नो, टू सी आल्सो इनकरेक्ट। डी देखो हमर जो पावर ऑफ द जुडिशियरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस, माने विभिन्न प्रकार जो केस हैला से पावर शक्ति अछि कि ओन जजमेंट निजर ओन जजमेंट को से कोन करि पारे ना डिफरेंट केसेस रे अर्लियर टू रिव्यू करि पारे। नो, इट इज आल्सो इनकरेक्ट। ते पे वन होची करेक्ट, ए होची करेक्ट। देखंतु ए होची करेक्ट। ठीक अछि, जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया रिफर्स टू द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव enactment and executive action। this power is derived from the constitutional and is a basic feature of it। ओके, यह होची तार बेसिक फीचर अटे। तने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या करेक्ट पचार। देखो चारोटी ऑप्शन देछि, एथि मध्ये कोनटा करेक्ट अटे। देखंतु ए 1 pursuant to the report of HN Sanyal committee the contempt of the courts act 1971 was passed। 2 देखंतु the constitution of India empowers the supreme court and the high courts to punish for contempt of themselves। थर्ड देखंतु the constitution of defines civil contempt। फोर्थ देखंतु in India the parliament is vested with the powers to make laws on contempt of courts। ओके, हमर देखंतु जो देछि परसेंट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एचएन सानियल कमिटी, एचएन जो सानियल कमिटी कर जो रिपोर्ट थिला द कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। ए जो एचएन सानियल कमिटी का माध्यम द्वारा हमर एक्ट जो थिला कंटेम्प्ट कोर्ट जो एक्ट थिला 1971 ए पास कराइथिला कि आई थिंक वन इज करेक्ट। ओके, देखिबा। टू देखंतु हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत जो संविधान रे एम्पावर करता द सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता एंड द हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। एंड देखंतु थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफेंस सिविल कंटेम्प्ट। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता सिविल कंटेम्प्ट। यस, देखो यार ऑप्शन देखिबा। ऑप्शन देखो हमरो 1 एंड 2
टू देखो 2 and 4, 3 देखो 3 and 4, 4 देखो 1 to 4 या सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर 4. ओके डी देखो 1 to 4 होची करेक्ट, 1 होची करेक्ट, 2 आल्सो करेक्ट, 4 होची करेक्ट. Constitution not to define civil contempt. Okay, but in India the parliament is vested with the powers to make laws on contempt of courts. ओके पार्लियामेंट अछि कोनोसी प्रकार शक्ति देकी से विभिन्न प्रकार कोर्ट रे लॉ कंटेम्प्ट को तैयारी करि पारे. ठीक अछि चला तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो हमरो with reference to India consider the following statement is correct. यह मते करेक्ट पचारछि. ओके दुईटा ऑप्शन देछि दुईटी मध्यरु केउटा करेक्ट अटे. ठीक अछि देखंतु 1 गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स हमर सरकार जो लॉ ऑफिसर अछंती एंड लीगल फर्म्स recognized as advocate but corporate lawyers and patent attorney are excluded from recognition as advocate. 2 देखो bar councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of laws. लॉ कॉलेज बुझीपारे ना बुझीपारे देखो आम सरकार जो लॉ ऑफिसर रही ठीक अच्छे से आईनगत रिकग्नाइज्ड एज एडवोकेट सर एडवोकेट हिसाब से रिकग्नाइज्ड स्वीकृति प्राप्त पाइले. बट किंतु कॉर्पोरेट लॉयर जो मैंने कॉर्पोरेट लॉयर जो मैंने सरकारी द्वारा प्राप्त हो लॉयर बट कॉर्पोरेट लॉयर से जो पेटेंट थाए अटर्नी आर एक्सक्लूडेड. ठीक अच्छे फ्रॉम रिकग्निशन एज एडवोकेट से कौन रिकग्निशन मिल न था एज ए कोर्ट एडवोकेट हिसाब से. बट वन इज इनकरेक्ट. ठीक अच्छे 2 देखो आम जो बार काउंसिल ओके बार काउंसिल हैव द पावर और बार काउंसिल शक्ति अच्छी पावर अच्छी टू ले डाउन द रूल्स नियम वाला रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन बुझे आईनगत सब शिक्षा एंड रिकग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज एंड किपरि भाव लॉ कॉलेज को से स्वीकृति देता या मतलब बार काउंसिल पावर थाए. ओके 2 होची करेक्ट. ये देखंतु ऑप्शन नंबर 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 ओनली, डी नॉन ऑफ द अबव. देखो सर सटीक आंसर होची हमर ऑप्शन नंबर बी. ओके 2 ओनली करेक्ट. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट indicate that it is a federal in character. ओके हमर जो फेडरल पचार ओके भारत जो पॉलिटी इंडियन पॉलिटी एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट करता है फेडरल कैरेक्टर. ओके देखो फेडरल कैरेक्टर पचार ए द इंडिपेंडेंट ऑफ ए जुडिशियरी इज सेफगार्ड. ओके हमर जो जुडिशियरी वो न्यायपालिकार जो हमर स्वाधीनता यह पचार 1 ए इज करेक्ट. ओके ये होची करेक्ट. 2 देखो तो यूनियन लेजिस्लेचर has elected a representative from constituent unity. And C देखो तो यूनियन कैबिनेट can have elected representatives from regional parties. And D देखो तो fundamental rights are enforceable by courts of law. ओके मौलिक अधिकार को एनफोर्सेबल करा जाय by court of the law not. यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए. ओके ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो हमरो विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. या मते करेक्ट पचाची. ठीक अछि देखो तो 1 जुडिशियल कस्टडी मींस an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused in locked up in jail. ठीक अच्छे 2 देखो ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. बुझी पारछंती हमर प्रथम देखो 1 होची हमर जो जुडिशियल कस्टडी कहले कोन यार अर्थ होची जो अक्यूज्ड हेतु जो पर्सन कस्टडी रे. ठीक अच्छे तार जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट कर जो कंसर्न बा चिंता रही ओके सच सच अक्यूज्ड इन लॉक्ड अप इन जेल जदी लॉक्ड हो देबो इन जेल. 1 2 देखो ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी. ठीक अच्छे कोनसी पुलिस ऑफिसर यदि कोनसी प्रकार जुडिशियल कस्टडी द्वारा यदि कोनसी अक्यूज्ड पर्सन को बंदी करा जाय थाए ठीक अच्छे प्रिजन हिसाब रे ताले बिना बिना देखो बिना अप्रूवल ले ओके पुलिस कैन नॉट बी इंटरोगेट. ओके 2 होची करेक्ट. ठीक अछि ऑप्शन नंबर 1 होची इनकरेक्ट. ओके देखो यार सटीक आंसर होची हमर ऑप्शन नंबर 2. ओके मन रखिथि ऑप्शन नंबर 2 होची करेक्ट. बी होची करेक्ट. ठीक अछि ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. बिना कोर्ट को अप्रूवल ले हमर पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी इंटरोगेट पचारि परिबे नहीं कोनसी प्रकार भी मध्य ताको आघात करि परिबे नहीं. ठीक अछि चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया. ओके करेक्ट मध्य यहाँ पचारछि जुडिशियल रिव्यू. ठीक है देखो 1 इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूशन. 2 एटा अलाउ करता है जुडिशियरी एंड स्ट्राइक डाउन लॉ इनकंसिस्टेंट विथ द कॉन्स्टिट्यूशन. 3 देखो इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो हमर जो क्वेश्चन देइछि प्रथम होछि तो एहा होछि पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कोन जुडिशियल रिव्यू हमर पार्ट अटे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड 2 देखो ये अलाउ करता है जुडिशियरी to strike down and log inconsistent with the constitution
and 3 देखो it is explicitly mentioned in article 13 of the constitution. तो यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर आई थिंक डी. ओके 1 2 3 आर करेक्ट. देखो तो हमर जो judicial review was declared part of the basic structure of the in case one of the Bharati versus state of the Kerala case 1973. ठीक है judicial review हमर part of the constitution law या क्यों केस दुई जन का केस मध्ये हमर डिक्लेयर कराइतला केस वन ऑफ द भारत केस versus state of Kerala. ठीक है 1973 रे. एंड judicial review under empowers करता है judiciary to strike down unconstitutional laws. ओके विभिन्न प्रकार अनकन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला सेगुडी स्ट्राइक डाउन करते कि जुडिशियल रिव्यू. एंड 3 देखंतु आर्टिकल 13 एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड करते जुडिशियल रिव्यू बाय स्टैंडिंग दैट लॉज वायोलेटिंग फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची हमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स कैन बी इश्यूड टू डायरेक्ट लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ए केस टू हायर कोर्ट और टू अनदर कोर्ट ऑफ इक्वल जुरिस्डिक्शन. ठीक अछि हमर एटा क्यों रिट जारी करा जाय थाए लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर करा जाय केस गोटे केस हला जहा कि लोअर कोर्ट रो हायर कोर्ट को ट्रांसफर करा जाय. ठीक अछि क्यों रिट जारी करा जाय थाए. ए हेबियस कॉर्पस, बी सर्सियोररी, सी प्रोहिबिशन, डी मंडामस. देखंतु यार सटीक आंसर होची हमर ऑप्शन नंबर बी सर्सियोररी. मन रखिथि. ओके सर्सियोररी. ठीक अछि हेबियस कॉर्पस कहले कोन एंसर करथे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन. विभिन्न प्रकार अनलॉफुल बा बेआईन भाबरे काहको यदि हम माने अटक करती से जारी करते हेबियस कॉर्पस. ठीक है सर्सियोररी इश्यू कराई थाए अनलॉफुल ओके एंड क्वास डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट. ठीक है एंड प्रोहिबिशन प्रिवेंट करते लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन. ठीक है एंड मंडामस डायरेक्ट पब्लिक ऑफिशियल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची हमरो consider the following statement about the independence of the judiciary in India. Okay independence of the judiciary in India correct है पचाची about the हमर independence of the judiciary. Okay ये one देखो the salary of judges are charged on the consolidated fund of India. हमर जो salary अछि कार हमर judges माने कर या कोन चार्ज कराय थे consolidated fund of India. two देखो judges of the supreme court cannot be removed except by impeachment. बिना इम्पिचमेंट रे सुप्रीम कोर्ट जजेस मान को रिमूव करा जाय पारि न थाए. थर्ड देखो द कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द इम्पिचमेंट प्रोसेस. कोनस प्रकार इम्पिचमेंट प्रोसेस होची ता माने नोजी जजेस माने कैन नॉट आलोचना करि परिबे नै कोनस प्रकार पार्लियामेंट रे. आंसर नंबर देखो तो ये देची 1 and 2, बी देखो तो 1 and 3, सी 2 and 3, डी 1 2 3. देखो तो यार सटीक आंसर होची हमर ऑप्शन नंबर डी. ओके 1 and 2 आर करेक्ट. 1 2 3 आर करेक्ट. ओके 1 होची ए एंश्योर करता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑल्सो. 2 होची रिमूवल ऑफ जजेस रिक्वायर एन इम्पीचमेंट प्रोसेस अंडर आर्टिकल 124. ओके एंड 3 देखो तो आर्टिकल 121 प्रोहिबिट करता है डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द जजेस एक्सेप्ट इन इम्पीचमेंट. ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट हमर आर्टिकल 121 मेंशन कराई है हमर जजेस कैन नॉट बी डिस्कशन अबाउट द कंडक्ट ऑफ ओके इन पार्लियामेंट. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो हमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर of the collegium system for appointing judges in India. Okay appointing judges in India not a feature of the collegium system. A it is based on the Supreme Court judgment. B it is explicitly mentioned in the constitution. C the Chief Justice of India head the collegium. and D it include the senior most judges of the Supreme Court. देखो तो यार सटीक आंसर होची हमर ऑप्शन नंबर बी. ओके इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट हमर कोन जजमेंट. देखो तो एक्सप्लिसिटली मेंशन कराई छी हमर नॉट ए फीचर देजी कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग जज इन इंडिया. यदि कॉलेजियम सिस्टम द्वारा जो अपॉइंटमेंट होइतबा जो जजेस माने सुप्रीम कोर्ट रे ओटा फीचर नो. ओके बी होची फीचर नो एहा मेंशन करा जाय नाइ क्योंटी हमर कॉन्स्टिट्यूशन एटा होची नॉट ए फीचर बट इट इज बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट एथिरे जजमेंट करथांती. एंड सी देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड ऑफ द कॉलेजियम आल्सो इट इज करेक्ट. डी देखो इट इंक्लूड करता है द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ऑब्वियसली इट कैन बी इंक्लूड सम सीनियर मोस्ट जजेस ड्यूरिंग आवर कॉलेजियम सिस्टम एंड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ए जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर which of the following articles provides the Supreme Court of India the power of advisory jurisdiction. ठीक है हमर पचाची कोन ना देखंतु which of the following articles क्यों आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया the power of advisory jurisdiction. A article 129, B article 131, C article 143, D article 144. देखो यार सटीक आंसर होची हमर ऑप्शन नंबर सी. ओके आर्टिकल 143 रे मेंशन कराई छ अबाउट हमर का विषय रे ना आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. ठीक है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देखो तो हमर आर्टिकल 121 डिक्लेयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ठीक है एंड आर्टिकल 133 ग्रांट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट. आर्टिकल 131 हमर ग्रांट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्रदान करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ड्यूरिंग हमर डिस्प्यूट था का मध्य सेंटर एंड स्टेट मध्य. आर्टिकल 143
ओके करेक्ट है इट एम्पावर करते द प्रेसिडेंट टू सीक एडवाइस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आर्टिकल 144 रिक्वायर्स आवश्यकता सिविल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैक्सिमम टेन्योर केतो होइताई एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये एक्टिंग वन ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉट ए फुल member of the chief justice of India but acting member पचार ओके acting chief justice of India एकर maximum tenure केते समय होता है A 2 months B 6 months C D 9 months D no such limit is prescribed यार सटीक आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ओके से प्रकार कोनस प्रकार नियम नाही जे एक्टिंग एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केते ड्यूरेशन पर्यंत से माने से ताकर पदवी रे रहि पारबे ठीक अछि देखंतु द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई मैक्सिमम tenure for an acting chief justice the appointment is temporary appointment कराई थाए and until the permanent CJI is appointed जे पर्यंत हमरो permanent CJI appointment होई नांती ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हेउछि हमरो under which of the following condition can the president remove of a supreme court judge ओके हमर जो देछि निम्नलिखित मानक मतलब क्यों कंडीशन क्यों शर्त कैन प्रेसिडेंट रिमूव प्रेसिडेंट कहले राष्ट्रपति को रिमूव ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज ठीक है देखो करेक्ट है पचार आंसर ठीक है ये देखो प्रूवन मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी एंड 3 नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटीज फॉर 6 मंथ्स सटीक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर ए ओके 1 एंड 2 आर करेक्ट मेन तो इम्पीचमेंट द्वारा होता है एंड इनकैपेसिटी कैपेसिटी यदि न थाए दे कैन नॉट बी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस ओके प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव करि पारती ओके सुप्रीम कोर्ट रो जज हिसाब रे ठीक अछि काहे कि से मानकर मिसबिहेवियर हला कोन प्रकार सेकंड इज इनकैपेसिटी ठीक अछि देखंतु आर्टिकल है हमरा रिमूवल अबाउट हमरा आर्टिकल 124 रे या मेंशन कराइ छै ओके नॉन परफॉर्मेंस ड्यूटीज फॉर 6 मंथ्स इज नॉट ए वैलिड ग्राउंड ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन हेउछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक फीचर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया PIL संबंधित क्वेश्चन देछि यूनिक फीचर यार कोन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ठीक है ये देखो इट कैन बी फाइल्ड ओनली विद द aggrieved party b it is a legislative mechanism to ensure accountability c it expand access to justice d it limits the judiciary powers to review executive action देखिए तो हमर PIL रो यूनिक फीचर है क्योंटा कहंतु आपण माने कमेंट करन देखो ये इट कैन बी फाइल्ड करथे ओनली बाय द aggrieved party and it is a legislative mechanism to ensure accountability दायित्व को या उत्तरदायित्व को या कौन करता है एनश्योर सुनिश्चित करता है लेजिस्लेटिव रे एक्सपांड करता है एक्सेस टू जस्टिस ओके एंड इट लिमिट करता है जुडिशियरी पावर लिमिट करता है जुडिशियरी पावर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देखो यार ऑप्शन एनालिसिस देखिए देखो ऑप्शन सी होची करेक्ट इट एक्सपांड करता है एक्सेस टू जस्टिस न्याय दबार यह कौन करता है एक्सपांड करता है एक्सेस बा सहायक होता है कि देखो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अलाउ एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन okay any individual or organization to file a case on behalf of the marginalized making justice accessible okay justice ପାଇଁ ବା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ they can be ଆମର केस करि पारे फाइल करि पारे on the behalf of the marginalized okay ठीक अछि चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हेउछि हमरो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके केस एंड देयर सिग्निफिकेंस इन इंडियन जुडिशियरी करेक्ट है पचास अबाउट द क्यों केस रिगार्डिंग द हमरो इंडियन जुडिशियरी ठीक अछि ये देखंतु केशवानंद भारती केस हेउछि हमरो 19 नंबर क्वेश्चन ठीक अछि देखो हमर केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन 1 इज करेक्ट हमर केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन स्टेट ऑफ केरला ओके एथि हमर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन विषय रे कोन कराइतला केस बा डिस्कशन होइतला ठीक अछि टू देखो गोलकनाथ केस डॉक्ट्राइन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग एंड 3 देखो मेनका गांधी केस राइट टू प्राइवेसी यार सटीक आंसर होछि देखो हमर ऑप्शन नंबर ए होछि करेक्ट 1 एंड 2 आर करेक्ट ओके हमर केशवानंद भारती केस एस्टैब्लिश्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन we cannot be changed in our basic structure doctrine ठीक अछि क्योंकि हमरा संविधान रे टू देखंतु कोलकनाथ लिमिटेड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स कोलकनाथ रे लिमिटेड पार्लियामेंट को पावर दिया जायतिला टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट करे माने संशोधन करबा को लिमिटेड पावर टिका पार्लियामेंट को दिया जाय ड्यूरिंग हमर गोलकनाथ केस रे ठीक अछि थर्ड देखंतु इनकरेक्ट काहे कि ना मेनका गांधी केस एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 but right to privacy was explicitly recognized in Puttasammy case 2017 the right to privacy okay गोपनीयता जो अधिकार या हमर क्यों केस रे रिकॉग्नाइज करैता पुट्टासामी केस 2017 बट मेनका गांधी केस हैज एक्सपेंडेड करथिला हमर पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 1 ओके पर्सनल लिबर्टी एंड एक्सप्रेशन ठीक अछि चलतु ये थिला कि हमर मोस्ट सॉरी अछि ने ए हमर अंतिम क्वेश्चन ओके देखंतु हमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्राइब्यूनल इन इंडिया ओके हे हमर करेक्ट पता छ अबाउट ट्राइब्यूनल ठीक अछि तीनोटी हमर ऑप्शन देछि तीनोटी हमर ऑप्शन मध्ये क्यों गुडी को करेक्ट अटे देखंतु 1 tribunals are established to reduce the burden on regular courts and 2 all tribunals are subordinate to the supreme court 3 देखंतु tribunals cannot adjudicate case related to fundamental rights
क्योंटे एटा करेक्ट देखो यार ऑप्शन नंबर हमर 1 ओनली करेक्ट अटे देखो ट्राइब्यूनल एम यूज टू रिड्यूस करता जुडिशियल पेंडेंसी एंड स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक एरिया ठीक अछि एंड ट्राइब्यूनल ना एम यूज रिड्यूस करते सम जुडिशियल पेंडेंसी and specialize in specific areas but two देखो not all tribunals are subordinate all tribunals are not subordinate but some have quasi judicial power किछि किछि केतोटी हमर quasi judicial power अछि हमर tribunals करो but not have all tribunals are subordinate ठीक अछि but third देखो tribunals can adjudicate case on fundamental rights unless explicitly barred ठीक अछि चलंतु या थिला हमर किछि या थिला हमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आई होप आपण माने को भलो लागिथिबो तो आपण माने ए परि भाबरे डेली क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबे को चाहू ता सहित आपण मानकर कॉन्फिडेंस मध्ये गेन हेबो एवं आपण मानकर मध्ये रिवीजन होई परिबो ए परि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबे को चाहू तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मध्ये करि परिबे निश्चय खुचरे ठीक अछि तो ए परि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर हम माने प्रैक्टिस करबा डेली ठीक अछि तो म आपण मानकर